Hello everyone. So that's me back with my new video regarding certain mechanisms from the topic on haloalkanes and haloarenes. Okay. So in this mechanism, what exactly are we going to do now? I have been receiving a lot of mails that SN1, SN2 reactions are already done. But what about E1 and E2 and how do we get to understand that particular reaction? किस तरह से हम उसको easily remember कर सके? काफी सारे mechanisms हम पढ़ते जाते हैं, mechanisms शुरू होते लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेते, right? So basically, this mechanisms are actually going to drive you crazy. So if you're able to understand, good. अगर समझ में नहीं आता, then you have to keep working on and on, right? So let's talk little bit about the elimination reactions, right? So आपने already SN1, SN2 के बारे में पढ़ा है. That's basically the substitution. Now every time there is a confusion कि ये substitution है या elimination है, right? तो इस elimination के doubt को दूर करने के लिए ये video आप देखिए, ठीक है? So now let's talk little bit about elimination. What do you mean by elimination? Now let's see this very big molecule right in front of you. अगर मैंने इस बड़े molecule में से कोई भी छोटे से fragments निकाल दिए, ग्रुप्स को एलिमिनेट कर दिया, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. सो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, राइट? तो ये एलिमिनेशंस एडजेसेंट कार्बन में से हो सकते हैं, राइट? Groups can be eliminated from adjacent carbon, it can be from alternate, opposites and all, right? So लेकिन हम ज्यादा फोकस करेंगे eliminations from adjacent carbon जिसको हम कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन, राइट? सो एलिमिनेशन में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. सो आइए देखते हैं एलिमिनेशन लाइक 1,2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है. Now you have this molecule in front of you. So if you could see here, at one position there is an X. ये X जिस कार्बन से अटैच्ड है, राइट, उसको हम कहेंगे अल्फा. अल्फा जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम कहेंगे बीटा. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है, राइट? तो फर्स्ट अल्फा कार्बन पे है X जो कि है हैलोजन और बीटा कार्बन पे है हाइड्रोजन, राइट? तो हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना, you call it as dehydrohalogenation, right? Let's say if this halogen is Cl. What is the molecule that gets eliminated? It's nothing but HCl. Now HCl acid है तो उसे कौन निकालेगा? Obviously a basic component. So we are going to use NaOH. Now there is one important catch. Substitution reactions में हम aqueous NaOH यूज करते हैं. तो अगर हमने aqueous NaOH यहाँ पे यूज किया, then you will end up getting an SN1 SN2 product. लेकिन हम पढ़ रहे हैं elimination reactions, right? So basically क्या होगा? We are going to use alcoholic NaOH or alcoholic KOH basically. Okay, so this is the most important aspects. Elimination reactions. For elimination reactions, we will need alcoholic KOH or alcoholic NaOH because they would generate sodium alkoxide. Okay, तो आइए देखते हैं elimination reactions का एक very simple example. So if you could see here, H और X eliminate हो गया. तो H और X eliminate होने की वजह से ग्रुप्स हो गए कम. तो उसका मतलब है मॉलिक्यूल सैचुरेशन से अनसैचुरेशन की तरफ चला गया, राइट? सो बेसिकली अ सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हैज बिकम अ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड. Two groups are eliminated, so you get an alkene, right? So this is what you call it as elimination reactions. Reactions wherein unsaturation is introduced in the molecule, or you can say a ring formation may take place, right? That's a different point of discussion, completely different point of discussion. Okay, now element जिस तरह आपने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 exactly parallel mechanisms है E1 and E2, right? E1 काफी मिलता है SN1 से, E2 काफी मिलता है SN2 से. यूनिमोलिकुलर बायमोलिकुलर, I hope you know, right? So एलिमिनेशन रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक है E1 और एक है E2, right? So E1 यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, okay? E2, right? E2 is basically again a second order. तो जिस तरह से हमने जब SN1 SN2 पढ़ा था, we started with SN2. इस बार हम शुरुआत करेंगे E2, right? So basically E2 क्या है? E2 elimination reactions देते हैं less sterically hindered alkyl halides. Okay, so आइए देखते हैं basically E2 mechanisms होते क्या है, right? So if you could see here, this molecule steric hindrance is very less, right? So basically when this molecule is treated with a strong base, right, you need a strong base in this case, right? Alcoholic solution, alcoholic KOH हम normally कहते हैं, right? So क्योंकि ये strong base है,
right? You have to understand this very carefully. क्योंकि ये strong base है, so it's going to be definitely a bimolecular reaction. Order is going to be 2 in this case, right? So this OH minus, this the base component is going to attack the hydrogen. तो हमें मिलेगा एक ट्रांजिशन स्टेट, एक कंसर्टेड मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं. नाउ इस मैकेनिज्म में बिटवीन द बेस एंड द हाइड्रोजन देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन, right? Whereas between carbon and hydrogen, can you see the bond breaking? Now can you see the bond, double bond formation between two carbons, right? But two adjacent carbon, and C और X का bond आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे टूट रहा है. So basically इस reaction में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है. सिंगल बॉन्ड्स टूट रहे हैं और डबल बॉन्ड बन रहा है, राइट? सो दिस इज बेसिकली द E2 मैकेनिज्म व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो नाउ इस रिएक्शन में देखने लायक अगर मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा, हाइड्रोजन और हैलोजन का पोजीशंस एग्जैक्टली ऑपोजिट है. सो यू नॉर्मली कॉल इट एज एंटी पेरिप्लेनर. एंटी मींस ऑपोजिट, right? So plane के opposite side में है hydrogen and halogen, so they can be removed very very easily, right? So this is basically the E2 reaction, right? अब हम इसका kinetics अगर discuss करेंगे तो base attack कर रहा है, तो obviously you have the substrate which is an alkyl halide, the concentration of the base, right? So the reaction has an order is equal to 2, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं E2, correct? So this is very very simple and understandable reaction, okay? तो ये था वेरी वेरी बेसिक थिंग अबाउट द E2 मैकेनिज्म, राइट? अब चलते हैं E1 मैकेनिज्म की तरफ. ना E1 मैकेनिज्म जैसे SN1 में हमने कहा था कि स्टेरिकली हिंडर्ड, राइट? E2 was स्टेरिकली अनहिंडर्ड. ना E1 में है स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड. तो मैं देखूंगा सबसे पहले टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. तो इसमें अगर मैं ट्रीट करता हूं विथ अल्कोहलिक, सो अल्कोहलिक यू कैन से what do you say, alcoholic base, right? नॉर्मली हम यूज करते हैं ना डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में अल्कोहलिक KOH NaOH, राइट? ये अल्कोहल कौन सा है, एवरीथिंग डेफिनेटली गोइंग टू मैटर, बट वी विल बी डिस्कसिंग दिस लेटर ऑन, ओके? तो बेसिकली क्या होता है, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, यू गेट अ कार्बोकैटायन, राइट? एंड देन बेस आकर हाइड्रोजन को निकाल कर लेके जाता है, राइट? सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द E1 मैकेनिज्म. तो कैन यू सी कार्बोकैटायन इसमें भी जनरेट हो गया, स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, राइट? सो 3 डिग्री सबस्ट्रेट्स ये रिएक्शन देंगे, करेक्ट? वेरी सिंपल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेस हाइड्रोजन को निकाल कर ले गया, right? So you have an unsaturation which is already introduced. So in this case, if you could see here, both of them are giving you an alkene, right? So this was about the E1 and E2 mechanisms, right? तो अब हम देखते हैं काइनेटिक्स की तरफ. तो इसमें बेस का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, तो ऑब्वियसली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, so it is an E1 reaction. तो ये था वेरी बेसिक थिंग अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड E1 E2. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोर अबाउट द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स and more details about the E1 and E2 mechanisms, okay? और उसके बाद हम देखेंगे comparison of E1 and E2 और कब हमें SN1 यूज करना है, कब हमें SN2 यूज करना है, okay? So stay tuned for more videos and the continuation of this particular video in the next part. Thank you.